so let's go for recording of this now session, GD session. Let me give you the topic. Topic is very generic. So please write low skilled engineers being produced in India. Low skilled engineers being produced in India. That is the topic for GD. So just think for 30 seconds. How do you want to discuss in this topic? Low skilled engineers produced in India. Okay, so I think we can start now. So I again start from Priyal. Introduce yourself. Introduce the topic. Good evening, everyone. My name is Priyal, and the topic that we all have been given today is low-skilled engineers being produced in India. I kind of agree with this topic. Firstly, now it has become a very common sight to see that the employers are not very satisfied with the engineers that they are hiring, partly because they don't have the proper skills. Also, we get to see certain job vacancies which want only experienced engineers. Now, I think that this problem, the reason for this problem, I can broadly divide it into two reasons. Firstly, because of the engineering syllabus, which is not up to date. Globally, we are seeing the fourth industrial revolution since 2011, but the engineering syllabus still deals with the only second industrial revolution. My second reason would be lack of practical exposure. Although we have projects in our final years or compulsory internships in our final year, but still engineers lack that practical exposure. So I think we must also talk about what we can do about this. Can we revamp the education system for engineering, revamp the engineering syllabus? Can we put in some compulsory projects or internships? What all solutions we can get? We must also discuss that. So this was all from my side. Thank you. Okay, Ashwani. Ashwani Kumar. I got an opportunity to start the discussion. Today's topic for the discussion is low-skilled engineers being produced in India. This is a very interesting and engaging topic, as we have seen. As we have already seeing that there are a lot of engineers being produced every year from the various technical institutions in India. In spite of around 42,000 private institutes and the various NITs and IITs in India, we are lagging the quality of the engineers nowadays. So I would like to want to discuss about what is the reason behind that, so we are producing this kind of poor quality of the engineers, that is lack of the responsible things, and the lack of the infrastructure like the lab facilities and the practical approach which were applied in the engineering is lagging. And in that note, I would like to start the discussion. Chandan. Yes, sir. First of all, good morning, everyone. My name is Chandan Kumar, and I am glad to initiate the discussion on the current topic, that is the low-skilled engineers being produced in India. Friends, as per my opinion, I am partially agree with the topic because of not all are the low-skilled engineers being produced in India. Some are the good skills also produced, but because of the better work environment they get outside India, that's why they don't want to work in India. That's why I am partially agree with the topic. And the topic is of current thought. Topic is of the general topic and very thought-provoking topic and very important topic because of the lack of skilled engineers being found by the company in India. Because of this, I think this is a very important topic. And friends, I would like to I think we should discuss the topic in two dimensions, like for the engineers being produced in low-skilled engineers being produced in India from private colleges or from government colleges. So I believe that all of us have some good points to contribute in the discussion. So I welcome you all to put your points in the discussion related to the topic in these dimensions so that we can discuss it among each other. On this note, I would like to open the house for the discussion. Okay, Manoj.
Good evening, my friends. My name is Manoj Prajapat, and I am happy to initiate the discussion. The topic given to us is low-skilled engineer produced, and friends, my opinion, this topic is a matter of concern, and I broadly divided this topic into two categories. First is why this is happen and how to resolve it. Why this is happen because is a private engineering college build faster than the students, and the second is a uh, uh, low, and the student not focus on the more focus on the written work, and sir, student forced by their families on the relative to do engineering, and sir, also this is one point is the faculties are the not too well trained, and sir, how to resolve this? First, sir, we limit the number of institute in India, and the second is we set the criteria, so we provide better facility to train our engineers. And sir, in my opinion, in the 10th class, in the one separate subject, we provide the every knowledge for the any discipline, so the student choose their career wisely. So this is from my side. I am sure my friends is the many point to offer and discuss. So I open the house for discussion. Okay, now Shyam. Okay, good morning, all of you. My name is Syam, and I take this opportunity to initiate the discussion. Now, the topic given to us is low-skilled engineers is being produced in India. Now, in my opinion, this topic is very interesting and of thought-provoking also. I believe that uh, every year in India produces a million of engineers across the country. So, but if according to the report, 80%, only 80% of the engineers are employable. There can be many reasons behind this, and I'm just listing down some of the reasons. The first one is old teaching techniques. That means whatever the teaching techniques we have been using. So it is one of the reason. The moreover, the professor in the some of the colleges, professor just cares about the completion of syllabus also, and the class notes, and a student also involves in only making CGPA. Though they don't even focus in the research field like a project or training, etc. Moreover, if I ignore some of the good colleges like IITs, triple IITs or NITs, many of the colleges has very poor infrastructure or very low quality lab also. So so the students who are passing from those institutions, they are having only theoretical knowledge. So if you say to implement their knowledge in the practical world, what will happen? They will fail. Why they will fail? Because of lack of training. So training is also one of the element the organization should have. Now there can be many other factors also. So I just open the house for the discussion. Please participate. Thank you. So I think the first round we have discussed, and that was introduction round. All of you have introduced the topic to the group, and now we enter the second round, which is a 10 minutes duration round, in which you people are to talk among yourself, listen to the points of others, and you have to give your own points to others, and come out some kind of conclusion in the third round. So now I open the house for discussion among all of you. Good evening, friends. My name is Priyal, and I would like to start with a very interesting point which has been given by one of my co-participants in his introduction, that many engineers actually did not want to do engineering. It is only under their family pressure or the social pressure that they were forced to choose this path. And he also gave a very good suggestion that in the 10th standard, we can introduce a certain, subject regarding maybe power plants, maybe some engines or certain basic engineering elements, something like that, which gives the students an exposure as to what engineering exactly is. And then they can decide whether they want to go ahead with that or not. I agree with Priyal but the that 10th class is not related to the engineering. It is the position where we can move to the all the dimension here. So 10th yes. class, I don't agree that the engineering field is only there. No, only to be put all in the discipline. engineering.
there is So many the all discipline. included all No, Which is- I because of the am also all agree with the discipline also. I'm also Uh, agree with the PL. This is one of the important factors. But for the Ashwani, low don't you skill think we are also professional taught engineers economics, we are also taught in India. political science, I'm we are agree- also taught history, Yes, That we are agree also with taught But we some have also portion of taught commerce as engineering well. Trying to in create 10th the and 12th interest as of well. agree with that the topic. student to the Why not have a separate what is the segment dream Why of we the have student? also learned Basics of And engineering. focus on this part engineering also. in I also class agree with 12th. that, and I just want to add one more point here. Sir, many students who do their engineering, right, said they take admission into the engineering college, but they really don't want to do engineerings there, because after the admission, after getting examination, after getting admission in the engineering college, what they will do, they start preparing for some other examination like a UPSC, civil services, or something which is I nice, one agree of with the Syam. reason, This is because also happened because in many our students college even also. don't, many student may even don't sit in the placement also. So how would they placed? Even they go for the preparation of I some also other like to non-engineering add that I think what they are not because of liking this, is the theoretical aspects in there are so many engineering. deserving I think candidates what for we can do engineering. here is introduce certain practical projects, compulsory projects. Like we have a project at the final year of our engineering. What we can do is that every year of the engineering, you deal with one project. So I would that like gets to you in add. a flow of being, this Yes. involved in the projects, question that we are going Yes, extracting work. what you are I would saying is like to right, add but that. I would like to add one more point here is the Yes. language. Language is also making the crucial point here, because many of the students is learning up to the class 12th on their regional language. When they come to the correct. engineering, they Right. have started to I learn agree in Yes. English language only. Yeah, This is yeah, the yeah. I main agree with problem. Ashwini. They Common slow their platform there, right? discuss. They slow their learning. But This no, is the no, main no. problem also. This Yes, is also Ashwini, I totally provide like agree the to with you. skills I We by like have the to to see institute many so little bit the disagree we with lack create their the soft proper skills, engineers. I like their to communication skills. little bit disagree with They also because only the focus on the language more written language word is and the just to assignment. They not translate. focus on the practicals and the our physical work, Language is just physical to try engineer to discipline. transfer message from If a one person student to come to the another engineering person. college and It's he not. first time started to learn in English, how he can able to It's write just a even the medium. It's question just a in the medium. English? So Yes, English is for just a this, medium the agree set with a that. But criteria language for is the also engineer makes a to problem Language is for develop also the one many new of of the the skills not for what the students all the in engineers. engineering. It's yes, not I'm what all. completely It's agree. not what Language is also one of the education. criteria that a student No, is I'm facing slightly disagree some with issues there, right? because I So think there could language also be a common platform so that language their is just a languages medium can be to enhanced, convey right? message from one person to another person. It's not Yes, totally about yes, English. So but for it's this, we but set it's the criteria slow the for learning of that a the every student. engineer learn the new skills. So they we produce the institute You are may say that the teacher for may not convey in their language because of the language problem. Convey the things of engineering elements, Yes, or yes, we yes. say syllabus or topics more properly to the student. But a student can also study these topics in their own language also. So there is Right, I nothing think related. one solution to this language problem could be introducing certain humanities subject like we have it in our first year, communication skills. We can have certain subjects throughout our engineering. Maybe subjects on body language, maybe subjects on how you speak, maybe how to have influence on others, maybe certain leadership I also qualities. like to add The- one more these point, are that the inclusiveness of students are also not there in private colleges because of the economic reason. Because of that, the students, those who get admission in those colleges, because of their economic advantage, they don't value the position and they do whatever they want. They being the indisciplined member, they are being not study well, not value their profession. Because of that, also many engineers in India have low skill. So there is I think also there is also a main problem in the private. Solution is motivational speeches to Yes. get them into flow. But there is one more problem Right. in the private institute or any other institute that But they started to Priyal, that giving the should also be numbers on respected the by the examination student. on the basis of That should how also much they have written, not accepted by how the quality student. he has written on the paper. Right, Chandan. Totally agreeing with you. But then, Chandan, what can be a solution to this problem? So Lack of motivation among the students. the authority have to take some strict action. If you are not There Sir, should be well disciplined, we there should be will made throw some you extra out. platform
where the are not, other soft skill like if you are communication not skill well or any disciplined, language then problem issues there should are be solved there. there are some So one punishment common made by the should be made by the authority. If you not follow these rules, guidelines, A or minimum criteria is set by the government indiscipline, of then India, you will be punished so that in every any student follow manner. this Either you rules, will But so that throughout Manoj, from don't the you think hostel these are or already from been the set? institute or Like 75% absent attendance from the criteria is classes? there, minimum CGPA criteria is no, there. no, no, What else no, can not, be put? not from. I think as more for the CGPA labs, or available attendance labs in criteria. them. Then this criteria not to satisfy the percentage, because in the online during this online session, the every student only on their I, camera and the I front of also like to but add they here not that lack of the giving learn importance to skills. the practical experience, that is the internship. The students are not also Yes. giving importance to the internship. Because of that, also Internships, lower right. skilled people, lower skilled Even many, engineers are also yes, For produced. the Chandan, instrument, you the are right. government Even many ensure of the that the colleges every they do student not have the provide instrument internship. to They are not the providing student internship. learn in the physical assurance of the every engineering discipline. So the government of India ensure every institute have the certain amount of instrument, so the student learn how to we do the experiment, because the many institute they not have the only name of the practical lab, but Yeah, only they I'm do coming only Yes. to that theoretical. point, the This infrastructure, this is the part. reality, because Infrastructure is also one of the important And the factors teacher which and the yeah, faculty also lead to there the in the low, lab is not low, giving the low skilled engineers in India. quality. So this is Yeah, yeah. also the problem But which the guys, engineer in faces. this so for in this this is the only the pandemic trained time, faculties the how hired by the can we government ensure that the and the labs and the institute practical only, This and is the exposure not actually this is get not certain to the related to criteria the will be student? pandemic. decided This is not related to the pandemic. It is coming from a long way. I'm long way. talking Yes, about I agree with you. Pandemic is long not way, a right. condition. Pandemic is But not a during the condition. pandemic, like for example, my case, I have passed out recently from mechanical department, and I have not seen a refrigerator till now being opened up. So I lack Yes, sir. that practical exposure. Yes, this Only is due to the this online Fine. This That's why education. problem I'm in the talking many this is about the institutes. recent practical, problem. This is the practical recent experience. problem, but it can be reduced after but when the COVID has stopped. This can be reduced, but the problem which Like a facing from the pandemic long time is Ashwini, a pandemic matter Ashwini, of concern. Ashwini, pandemic is basically a I'm very saying short that term the problem, right? And unemployment students or are bad not quality of valuing the education is practical coming from a experience. long time. Students are So not understanding pandemic the is not importance of the practical experience. Yes. They are not being aware about the importance of the practical experience. As I'm talking to the students. Yes, yes, I agree with you. Teacher must aware the student about the importance of the practical experience. That I should be also helpful. agree with Because you of that lack of the student in practical, the college also student, ensure- the company I will think not hire the one thing engineering. the college must also do is ensure active participation of the students in the various clubs of the college. Clubs which are involved in making motorcycles, clubs which are involved in some making electric cars, And also personal certain skills. clubs, personal skills as well. But I think So for we are talking about the job skills here. Yes, technical. So for skills the as engineering, like we reality have skills. the only knowledge of the engineering, so we can set the criteria only who we certain exam we conduct by the government, like the GATE exam. So who is a classic qualify the GATE exam? Only who student get the final degree of the Correct. engineering. Set some time Yes, of criteria decided by the institute or the government. So the quality of the engineering yeah, and the you are right, well you are trained right. engineer Manoj, you are right. you Government are should right, put but But I I want to just also want to because of add lack that, of the but I want to also add that should issue some where we are criteria seeing of that work experience. GATE It is qualified also most of it the is GATE one of the qualified solutions. student score less in their engineering, and the student who has scored more in their engineering period did not even qualified in GATE. This is the But Ashwini, do you think Yes, GATE is Ashwini, we a are fine judge? GATE is a fine because judge they of still your don't skills. seriously take GATE because they are only already placed in the But college, in so GATE they exam, didn't take a it fine seriously judge of GATE. your skill. I think gate should not be the criteria for judging, because actually Some I No, other no, GATE but should other not. this is exam not a also, criteria, but one of the criteria one of which the we are yes, like one if nowadays. you also want other to, exam. okay, if you want to involve some competitive Ashwini, can you exams, give example? so then Can you involve give an example? IIT, JEE, JEE mains or JEE advanced, because
if you want to get the admission in higher colleges, higher ranking colleges, you have to go through some competitive examinations, right? So all those students who already have qualified, suppose JEE Advanced or JEE Mains, they get good colleges like NITs or IITs. And in Right, IITs your or NITs or MCQ higher ranking solving colleges, skills do not decide there your is skills. there is already a good environment within the students. Sam. Okay. It is also So I relative. think- The Okay, India I has think a now we specific conclude. institute. So we go for conclusion now. From the Okay, okay. Real, go ahead and conclude now. So, friends, I think we all have had a fruitful discussions and we have arrived at certain mutual consensus. Like, for example, we saw how engineers are basically lacking in two aspects, one in the technical aspects and one in the non-technical aspects. Coming to the technical aspects, what we can do here is we can, encourage their participation in the clubs of the college, clubs dealing with all the technical matters. Also, we can involve certain course updations in the engineering syllabus. Also, certain things we can do in the non-technical side as well to improve their non-technical soft skills. We can promote entrepreneurship. We can promote vivas and presentations in the subjects, and I think this can be done. And all in all, it has been a very good discussion, and I am lucky to be a part of such a good discussion. Thank you. Shyam? Shyam, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please conclude. Okay. Okay, friends, I take the opportunity to conclude the discussion. Now we had a not a very smooth discussion, but we have some common points like not everyone who are doing the engineering, not everyone want this, because once they get admission into the top ranking colleges, they start preparing for other examination. This is the one point, and the other point is language. One of the participant here said like language problem, because up to the 10th or 12th level standard, we learned the things in our regional languages. So when we go to the central level colleges or the college, any colleges, we have we face some issues, language related issue we face there. And Priyal said that about the motivational speeches, because when a particular student get admitted in their colleges, they leave study, right? So they need some motivational speeches to, so that the flow can be maintained. So this is what I conclude. Thank you. Okay. Chandan? Okay, friends, I took the opportunity to conclude the discussion. The discussion was quite good, as all of our fellow members have give their point, like they're not passionate of the engineers about their profession, because and they are doing engineering just because of their family pressure or something else. And other point is talking about the language, but some of our member is not agree with the language is a problem to produce low skill engineers. And other is infrastructure. Infrastructure also play major role in the low skill engineer being produced in India. And another is practical experience, as some of the members have that it is also one of the important factor in producing skilled engineers in India. And the other is lack of motivational speech, which also play important role. These are the points that we are discussed in the house. And Yeah. Manoj? from some of the points, we all reach on the consensus. Okay, then thank you. Manoj? Friends, I take the opportunity to conclude the discussion. We have very good discussion and very important points come out. Like Priyal said, the many companies not satisfy the skills of the engineers. They want to experience engineers, and we lot of the practical experts. Like Chandan said, starting with they not agree with these topics, and Syam says that we have the old technology. And so some many reasons, like we don't have the skills teachers, also we not have the infrastructure. But it is also true the India have the many prestigious which are the known as the engineer education service also, sir. So we conclude that the many
institute are not a facility of that, but we have the many institute the facility of that. So I conclude this. Okay, now Ashwini. Yes, sir. Thank you. I got an opportunity to start the, sorry. Thank you. I got an opportunity to conclude the discussion. The discussion were very much healthy, and we have all come to the one point. Many of the friends said about the old method of the teaching, and some of my friends says about the motivational speech is required to motivate the engineering students to achieve their goal. Also discussed about the lack of the infrastructure, and also the participation in the online participation in the practical activities is also less nowadays by the electrical engineering students. So on that note, I would like to conclude the discussion. Okay. So now let me give you the listening feedback. See, I told you that first 30 seconds. The rest you please memorize. कौन सी line memorize करनी है? Okay, friends. Good morning. My name is Chandan, and I take the opportunity to introduce all of you to the topic. Friends, the topic given for the discussion today is related to engineering education in India, and that is the low-skilled engineers produced in India. थोड़ा बहुत तो variation डालो उसमें. I largely agree with the statement. As India is not producing engineers which you can say are ready for industries or they are employable in industries immediately. So I agree with the statement. Friends, I believe that we should discuss this entire topic in the following aspects. वही एक चीज तो तुम्हें डिस्कस करनी है. हाँ, एक लाइन जोड़ सकते हो कि यार इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक एंड एंगेजिंग टॉपिक. कुछ भी ना नाम सोचो क्या है, ये 4-5 लाइन रटो. ये तुम्हें जैसे तुम जंप करोगे ना इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो 4-5 लाइन फर्राटे से निकलनी चाहिए. वहीं पे तुम्हारा जीडी क्लियर हो जाएगा. इसलिए मैं इस पे इतना स्ट्रेस रखता हूँ. अब जो डायमेंशन है वो दिमाग लगाना है. वहीं पे तो दिमाग लगाना और कहाँ लगाना है, और उसके लिए लिखने की जरूरत भी नहीं है. आप दिमाग लगा लो ना कि यार डायमेंशन क्या बन सकती है, इसकी क्या डायमेंशन बन सकता है यार, तो वो आप लगा सकते हो. इसमें डायमेंशन एक जो मेरे को अच्छा लगा प्रियल ने दिया था कि एक तो करिकुलम के ऊपर हम बात कर सकते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है. तो कॉलेज का करिकुलम एक पार्ट है जो इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं बनाया गया है. अभी भी हम कन्वेंशनल करिकुलम पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें हमें पता नहीं है. इन दो के ऊपर ट्रबल है जो प्रियल ने बनाया. एंड आई थिंक अश्विनी ने जो बात किया, कोई डायमेंशन तो अश्विनी ने नहीं दिया, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ लैब, ये पॉइंट्स मेंशन करना अश्विनी ने स्टार्ट किया. अश्विनी आप पॉइंट्स बता रहे हो, आप डायमेंशन नहीं दे पा रहे हो. पहले से भी आपने जो डिस्कशन किया उसमें आपने डायमेंशन नहीं दिया. पॉइंट्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक बेसिकली ब्लड इन द स्ट्रक्चर. जो आपने बॉडी का एक स्केलेटन बनाना है, स्केलेटन इज स्ट्रक्चर, स्केलेटन इज डायमेंशन. स्केलेटन बनाओ, ये हाथ बन गए, टांगे बन गई, उसके अंदर फिर सारी चीजें डाल दो. लेकिन आप डायरेक्ट जो सेकंड 10 मिनट का डिस्कशन है उसके पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में आप बोल रहे हो, दैट इज नॉट गुड. चंदन ने देने की ट्राई किया प्राइवेट एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज. चंदन ने बोला आई डोंट बैक टू डिफर, देयर आर गुड कॉलेजेस, IITs, NITs, एंड वहां पे उसने नाम तो नहीं लिया IIT NIT का, लेकिन उसने बोला गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिफरेंट है. तो प्राइवेट के बच्चों को बोल सकते हैं कि वो स्किल्ड नहीं है, गवर्नमेंट के हम बोल सकते हैं. आई डोंट नो दैट इज व्हाट ही मेंट और समथिंग, बट उसने ऐसे डिवाइड किया. मनोज ने बोला कि व्हाई वी शुड फोकस ऑन व्हाई दिस इज सो एंड फोकस ऑन व्हाट टू डू. आई थिंक वो क्लासिफिकेशन उसने किया. श्याम क्लासिफिकेशन नहीं किया, और श्याम ने कुछ डाटा दिए जो मेरे को सही नहीं लगा. उसने बोला कि मिलियन प्लस इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं. मेरे को नहीं लगता 10 लाख इंजीनियर अभी इस टाइम पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेरे को लगता है 6-7 लाख ही इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं. नंबर 2, 80% आर एम्प्लॉयबल. मे बी आई हैव हर्ड दैट वे, बट 80% इज ह्यूज नंबर. जो आपने 80% का भी एक डाटा लिया था वो भी गलत मेरे को लगा. तो श्याम, कोई भी डाटा ऐसा नहीं बोलना है जो गलत हो, वो तुम्हारे मार्क्स बहुत गिरा देता है. डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स तभी देना है अगर तुम्हारे पास डाटा हो. अब मेरे को लगता है कि इसकी डायमेंशन जो मैंने सोची थी, बैठे बैठे जो मैं सोच रहा था, इसका डायमेंशन ये हो सकता था कि लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स व्हाई इंडियन इंजीनियर्स आर, यस आई लार्जली एग्री दे आर नॉट industry ready. Now why? I can divide this entire topic into 3 reasons or 3 categories. Number 1, the student themselves. If a student is good in mathematics or student is good in
11th 12th class in mathematics or school in good in studies does not mean he should go into engineering. So is the student joining engineering out of interest? That is number one. In India, it is this is the national hobby or to pursue engineering or something if you're good in mathematics. So that may not be the case. Second, on the part of college or infrastructure. Now we know that there are colleges, labs are not there, practical exposure is not there, industry academia interaction is not there. Industry का college के साथ interaction नहीं है. Who is to be held responsible for that? Educational institutes. Now where government and private institutes are different, because government के अंदर maybe labs are more established, private के अंदर labs are not established because उसके लिए पैसा लगेगा, खर्चा आएगा. लेकिन एक चीज ना गवर्नमेंट कॉलेज में है ना प्राइवेट में है, वो है इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन. भाई मेरे को जॉब करनी है इंडस्ट्री में, तो कभी आपने इंडस्ट्री, आप चाहे आईआईटी के ग्रेजुएट हो, चाहे एनआईटी के ग्रेजुएट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज के ग्रेजुएट हो, आपका कितना इंटरेक्शन रहा प्राइवेट कंपनीज के साथ जिनमें आपको जॉब करनी है? वही नहीं. इंटर्नशिप आपने की लेकिन उसमें भी कॉलेज ने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले नहीं किया. तो एक पार्ट कॉलेज के पार्ट पे आ गया. तीसरा टीचर्स के पार्ट पे. हाउ मेनी good candidates become teachers in engineering education? That is the last option in India. You don't want to become teacher in engineering college. You want to join public sector, you want to join corporate sector, you want to join jobs immediately after BTech. You don't want to do PMTech and PhD and become a good teacher. If you do not have good teacher, do you think you can produce good engineers or good students? You can't. तो तीन पार्ट पे लिमिटेशन है. बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, क्या उसका इंजीनियरिंग का टेम्परामेंट है भी कि नहीं, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, जो कॉलेज इंजीनियरिंग खोल के बैठे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल के बैठे ये कोर्सेज, क्या वो जेन्युइनली इसके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? लैब्स भी बना दी, चलो मान लिया, क्या इंडस्ट्रीज को बुला पाए, वो इंडस्ट्री क्या एकेडमी इंटरेक्शन करवा पाए? तीसरा पार्ट, जो टीचर हैं, क्या वो आउट ऑफ इंटरेस्ट टीचर हैं? क्या वो इंजीनियरिंग एजुकेशन को पैशन के साथ लेते हैं? आप ये तीन चीज इंप्रूव कर दो, इंडियन इंजीनियरिंग सिस्टम विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली. मेरे को लगता है ये तीन डायमेंशंस हैं. आई थिंक हमें इन तीन डायमेंशंस पे बात कर सकते थे. अब इसमें मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट आप पहला रखो, क्योंकि एक्चुअल में एक ही आदमी इंट्रोडक्शन कर सकेगा जो जंप करेगा. मैं वो वाला फॉर्मेट भी हम करने वाले हैं जल्दी, थोड़ा सा आपका ट्रेनिंग हो जाए. तो हर एक आदमी इंट्रोडक्शन नहीं करेगा, जो पहले कूद गया वो इंट्रोडक्शन करेगा, जो पहले कूद गया वो कंक्लूजन करेगा. एक और चीज का ख्याल रखना कि जैसे 10 मिनट हो जाते हैं डिस्कशन के, तो आपको तैयार रहना है. जैसे ऑब्जर्वर बोलता है कंक्लूड, आपको जंप कर जाना है. बाकी लोग डिस्कस कर रहे होंगे, आपको जंप कर जाना है. आपको लास्ट में नहीं बोलना है, आपको शुरू में कंक्लूजन, आपको शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए कूदना है. फिर आपको इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, अब आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, दूसरे पार्ट का चांस वो नहीं देगा, इंट्रोडक्शन के लिए ही बोलेगा. दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है. तो दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग आप नहीं करते हो. अभी जो आप दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग में आपको चांस देता हूँ, वो इंट्रोडक्शन में तुम्हें करना है. जैसे प्रियल ने चांस दिया और सेकंड पार्ट में कूद गया, एक्चुअल में इंट्रोडक्शन में कूदना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि सेकंड पार्ट तो है ही नहीं कुछ. ऑब्जर्वर सेकंड पार्ट में इंटरफेयर नहीं करता. फिर 10-15 मिनट के बाद जो ऑब्जर्वर है बोलता है प्लीज कंक्लूड नाउ, तो उस टाइम पे मोमेंटम बना होता है, कोई ऑब्जर्वर की बात नहीं सुन रहा होता. आपने उस टाइम पे कूदना है और इंट्रोडक्शन आपने कंक्लूड कर देना है. तो आपको कहाँ एज मिलेगा बाकियों से? इंट्रोडक्शन में. कहाँ एज मिलेगा? कंक्लूजन में. कहाँ एज मिलेगा? जब आप बीच में पॉइंट्स देते रहते हो, वो आपको एज मिलेगा. बाकी जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं ना, उससे तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, कि डायमेंशन ढूंढना स्टार्ट हो जाना चाहिए. इतनी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, उससे तुम्हें ये लग जाना चाहिए कि हाँ हमें बोलना कैसे है, क्या डायमेंशंस. अब ये तीन डायमेंशन जो मैंने आपको बताई, अब सोचो डिस्कशन कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम इन तीन पॉइंट्स के ऊपर ही बात करो. इन तीन पॉइंट्स के अंदर तुम जितना मर्जी चीज डाल दो. करिकुलम कौन बनाएगा? कॉलेज ने बनाना है. देयर आर डीम्ड यूनिवर्सिटीज. करिकुलम किसके साथ मिलकर बनाना चाहिए? इंडस्ट्रीज के साथ. क्या तुम्हारा इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन है? नहीं है. तो करिकुलम बनाओगे कैसे? इंडस्ट्री को क्या चाहिए पता कैसे चलेगा तुम्हें? आप एज अ स्टूडेंट आपने कहाँ पे ज्वाइन करना है? कोर में आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि इंडस्ट्री में कभी देखा नहीं जाके आपने. तो इंडस्ट्री में अगर गए नहीं तो कोर में इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया कोर इंजीनियर प्रोड्यूस कहाँ कर रहा है? आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाना चाहते हो इस कंट्री में, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लाना चाहते हो, लेकिन सारे इंजीनियर चाहे केमिकल है, मैकेनिकल है, सारे के सारे आईटी कोर्स कर रहे हैं, आईटी इंजीनियर्स बन रहे हैं. दैट इज नॉट अ गुड फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. वी डोंट वांट टू बिकम ओनली software engineers producing country. That is not good for engineering education as well as industries in India. इसीलिए क्या होता है कि छोटी छोटी चीज भी आप चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हो. क्यों? है ही नहीं आपके इंजीनियर्स. क्यों? जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो एक ब्लेड बना सकता है,
जो एक कंपनी में ब्लेड बना सकता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर क्या कर रहा है, वो पाइथन सीख के, जावा सीख के वो सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग कर रहा है। तो दैट इज नॉट अ गुड डेवलपमेंट, दैट इज नॉट गुड फॉर कंट्री एज अ होल। हाँ, आपको तो नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए आपको तो जो मिलेगा वो आप करोगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो गड़बड़ हमें पहचाननी है। दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू। बस मेरा लास्ट एडवाइस आपको ये है कि जब भी टॉपिक दिया जाए उसको फील करके डिस्कस किया करो, उसमें एंटर करके डिस्कस किया करो, घुस के क्या आंसर एक्चुअली है क्या यार ट्रबल, और थोड़ा सा क्रिएटिव रहो तो आपको आंसर्स मिल जाए। राइट, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। तो आज आपने सब लोगों ने बोला, दैट इज गुड थिंग, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा और आप उसको इलेबोरेट कर सकते थे। अश्विनी, आप अपने पॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया करें, उसको कंक्लूजन तक लेके जाए। जैसे लैंग्वेज भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग उनको समझ नहीं आता, तो एक लैंग्वेज भी क्राइटेरिया होना चाहिए। जो लैंग्वेज आपने बात की है, लेकिन क्या है कि स्किल में लैंग्वेज भी आती है। आपने जब स्किल एनहांसमेंट की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज भी आती है। तो अगर टेक्नोक्रेट्स को लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो लेट्स लर्न, वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स वगैरह का भी हो जाएगा कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हमें सिखानी चाहिए अगर हमें वर्ल्ड में ग्रो करना है। अगर हमें वर्ल्ड ओवर ग्रो करना है और हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो हमें इंग्लिश भी एज अ लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, बिकॉज हमारा प्रोफेशन एक ग्लोबल प्रोफेशन है। अगर आप देखोगे हमें मैक्सिमम जो करियर मिला है वो हमें मिला है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर, जो इंग्लिश की वजह से हमें मिला है। और वही चीज हमें बाकी इसमें भी हो सकती है। जो हमारे जितने क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ना आना हमारा हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट वी आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, हमें इंग्लिश आनी भी चाहिए। दैट इज हाउ वी कैन डू दैट। बाकी आई थिंक इट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क नाउ? सर अगर फर्स्ट में ना सर एक बार इंट्रोडक्शन हो जाता है सर, दोबारा नहीं हो सकता ना इंट्रोडक्शन तो सर? नहीं, इंट्रोडक्शन एक ही बार होता है। मतलब और मतलब फिर ना सिर्फ पॉइंट्स पे आता ना सीधे फिर तो? पॉइंट्स पे आते हैं सीधे। और सर इंट्रोडक्शन अगर एक ही है। दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाए तो? जो जीत गया वो जीत गया, प्रैक्टिस से आएगा वो। अच्छा, मतलब दोनों बोलते रहो फिर नहीं, introduction बोलते नहीं रहो, एक को रुकना भी होता है। अगर दोनों बोलते रहो दोनों के नंबर भी करते हैं, ये प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है। फिर आप कई बार ये होता है कि आप रुक के नंबर जीत जाते हो, कई बार वो बोल के नंबर हार जाता है। वो बोलते रहा ऐसा लगेगा कि वो तो यही चल रहा है, मतलब ज्यादा ही एडामेंसी में है, तो उसके नंबर करते हैं। या ऑब्जर्वर के ऊपर है कि कौन जेन्युइन था इन दोनों में से, ये देखना ऑब्जर्वर के ऊपर है, उसके हाथ में नंबर है। और सर है ना, सर इसमें से किसी गर्ल्स कोई मतलब बोल रही है तो उसको मतलब सर काट सकते हैं क्या सर ऐसे? हाँ बिल्कुल, गर्ल्स को क्यों नहीं काटना है, यहाँ कोई रिजर्वेशन पॉलिसी की बात मतलब थोड़ी हो रही उनको है। इंटरप्ट नहीं करना? बिल्कुल बिल्कुल, गर्ल्स को आप इंटरप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर कंक्लूजन के पार्ट में सर, और ओवरऑल डिस्कशन में अगर कोई पॉइंट सर ठीक मिला नहीं है तो सर हम जो पॉइंट अपना डिस्कस किए हैं तो सर एज पर माय ओपिनियन करके सर अपना पॉइंट तो सर रख ही सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। और बोला वी हैड अ डिस्कशन, दो डिफरेंट पॉइंट्स केम, some of the co-participants were of this opinion, some of the members were, co-participant नहीं बोलना तो member बोल दो, friends avoid करना, you are not friends। तो आप बोल सकते हैं some members were of this opinion, some members of this opinion, in my opinion, बिल्कुल बोल सकते हैं, अपना तो रखना ही है और बाकियों का भी रखना है। This is how it is, और सर जो इंट्रोडक्शन में सर जो हम डायमेंशन सर अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किस टॉपिक को और सर डायमेंशन अगर डिफाइन कर दिए तो सर उससे कंक्लूजन पार्ट में सर उसको लेकर कंक्लूजन तो कंक्लूजन रहेगा ना, बाकियों ने क्या डिस्कशन किया, ओवरऑल क्या डिस्कशन हुआ, कंक्लूजन उसका होता है। मेन बॉडी में सर हम अपना डिस्कस करेंगे सर दोनों डायमेंशन, अपना भी डिस्कस करेंगे, बाकियों को सुनेंगे भी, बाकियों की बात सपोर्ट भी करेंगे, काटेंगे भी। मेन बॉडी में आपको दूसरों को भी सुनना होता है, मेन बॉडी में वो ये चेक करता है कि तुम दूसरों को सुन रहे हो कि नहीं। जैसे कि सर जो डायमेंशन हम डिफाइन किए थे, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का जो करिकुलम जो भी है, इंजीनियर्स निकल रहे हैं वहाँ से लो स्किल्ड, गवर्नमेंट कॉलेज का अलग है, प्राइवेट कॉलेज का अलग है, उसके अकॉर्डिंग लो इंजीनियर्स वहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं। तो उसको सर डिफाइन पॉइंट्स रख कर सर डिफाइन सर पूरा तो नहीं कर सकते। पॉइंट तो रख दिए लेकिन तुम उसको लेके नहीं गए ना, अगले पॉइंट तक नहीं लेके गए। तुम्हें बोलना चाहिए था कॉलेजेस तो हैं, पूरा सर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो एक दो पॉइंट सर डिफाइन करेंगे। पूरा जब तक नहीं बोलोगे उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा ना, कंक्लूजन में जब तक पूरा नहीं बोलोगे तब तक मीनिंग पता नहीं चलेगा। बोलना जरूरी है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी है। और एक्चुअली क्या है, एक अच्छे मैनेजर को दूसरों की बात सुननी भी चाहिए। और बॉडी पार्ट में ऑब्जर्वर ये देखता है कि तुम दूसरों के पॉइंट सुन भी रहे हो कि अपने बात रख रहे हो आगे, इसलिए बॉडी होता है, बॉडी पार्ट। इंट्रोडक्शन, इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटी, कंक्लूजन
होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि नहीं? जीडी के तीनों पार्ट्स का मीनिंग है। इंट्रोडक्शन का क्या मीनिंग है? डू यू हैव इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटी। नंबर 2, बॉडी पार्ट, यू आर लिसनिंग टू अदर्स, कैन यू टेक पीपल अलोंग विद यू, दूसरों की बात सुनते हो कि नहीं? कंक्लूजन, क्या जजमेंटल हो भी कि नहीं? अपनी बात को तो नहीं डिसीजन ले रहे हो, बाकियों की बात भी जजमेंट है तुम्हारे में, सही है और गलत की। ये 3 चीज ये होती है, इन तीनों का मीनिंग होता है। कंक्लूजन का मीनिंग होता है, इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है, बॉडी का मीनिंग होता है। ऐसे होते हैं ये। समझ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये ऐसा नहीं है तुम मजा लेने लगोगे तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। मतलब मैं सुबह से शाम तक 10 जीडीज भी कई बार किया है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर तुम इन्वॉल्व करो अपने आप को तब, अदरवाइज नहीं। एंड ज्यूम करो कि जब मैं टॉपिक देता हूँ उसके बाद आपके साथ ही सोचना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आते हैं पॉइंट्स आ जाते हैं अच्छे अच्छे, आपसे सीख के भी आते हैं पॉइंट्स अच्छे अच्छे। एंड अगर तुमने इस आर्ट को डेवलप कर लिया तो ये सिलेक्शन तक ही नहीं रहेगा, ये तुम्हें आगे ग्रोथ दिलवाएगा। ये जो तुम आर्ट अभी सीख रहे हो, बोलने की, सुनने की, डिस्कस करने की, डिबेट करने की, ये तुम्हें आगे ग्रोथ दिलवाएगी लाइफ में बहुत, अगर तुम्हें आ गई तो इसको सीखो, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो के, टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं हम लोग, तो ढंग से सीख लो ना यार इसको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक टेक्नोक्रेट की पर्सनैलिटी का। सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कम्युनिकेशन है, बात करना, दूसरों की सुनना, इंटरेक्ट करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही हमें एम्प्लॉयबल बनाता है, ये स्किल है एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल, दूसरों के साथ बात करना, और इसमें एक्वायर करो इसको। ये ट्रेनिंग वही चल रहा है यहाँ पे, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको लर्न करो ढंग से, और हो जाता है। ये अच्छी बात है कि ये हो जाता है, ऐसा नहीं कि साहब ये बाय बर्थ होता है या आप अभी नहीं सीख सकते, ये आ जाता है और बहुत जल्दी भी आ जाता है। 5-10 जीडी के बाद आ जाता है। फिर तुम बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन ला पड़ते हो करने, बहुत अच्छी तरह से जेस्चर, पोस्चर, प्रेजेंटेशन, दूसरों को सुनना, आई कांटेक्ट, यही तो है पर्सनैलिटी। और क्या है पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी ये थोड़ी होती कि मैंने दाढ़ी मूंछ कैसे रख ली या कपड़े कैसे डाल ली, वो नहीं होती पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होती जब तुम बात कर रहे हो तो दूसरों की सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो, दोज थिंग्स वो सीखो और तुम कर जाओगे उसको। बस थोड़ा इंटरेस्ट लो यार, दैट इज ऑल आई वांट। कि हर बार जब कोई बात बोली जाती है तो उसको ध्यान से नोट करो कि इंट्रोडक्शन में क्या देखना चाहता है वो, बॉडी में क्या देखना चाहता है, कंक्लूजन में तुमसे क्या देखना चाहता है। वो चीज अगर तुम समझ गए तो अकॉर्डिंगली फिर उसको बिहेव करो, सीख जाओगे। बस पार्टिसिपेट करो और इंटरेस्ट के साथ करो। और जो मैं टॉपिक भेजता हूँ उनको रिवाइज कर लेना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट वाले, राइट। सर वन मोर थिंग, हम लोग डेटा यूज नहीं कर सकते हैं जीडी तो में। करना चाहिए, पर गलत डेटा नहीं ना यूज कर सकते। जैसे इंडिया में कितने इंजीनियर्स, टाइमिंग क्या होगा सर? यस, टाइमिंग सर कितना होता है जीडी का सर? ये इतना ही होता है जितना मैं दे रहा हूँ तुम्हें, 15-20 मिनट टोटल, 15-20 मिनट बस, सारा मिला। डाटा दो लेकिन करेक्ट डाटा दो, राइट। ओके, चलो देन वी सी यू टुमारो एंड वी मीट टुमारो अगेन। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।